Namaskar. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH Samriddhi International Webinar Series at milestone of 2406. Thank you very much. With the oath to protect bees who nourish us all. This is the theme. So we are not a cruel generation of Homo sapiens, but definitely we are kind enough to protect, to harvest, to generate safety for them, to enable them to proceed further for duties as they have drafted by God. Thank you very much. With this, congratulations for Beach Day. I would like to request Dr. Sakat Kumar Basu from Bengal and Canada for his kind views on the topic. Welcome. Thank you. Thank you, Sharmaji. Once again, thank you very much for giving me this opportunity. And once again, your persistence in continuing the Ayush platform every night of your life. You are giving your health, you are giving your blood. You are like a freedom fighter for Ayush. So that's up to you. It's not an easy thing to do. Everything that you are trying and pushing so hard is greatly appreciated. Now Thank you. coming to the no, thank you. You are most welcome. Now coming to the Bees Day, 20th May is now celebrated as World Bee Days around the world. And why it is so important? It is important because, Einstein said that when we start losing bees, we will be start losing our human civilization. Bees are important not only for our production of honey, because they collect nectaries and pollen grains from plant and process them in their gut and vomit them and regurgitate these vomited products. We ultimately turns into honey, which we use commercially as a part of our nutrient-rich food sources. Although various forms of adulterated honey are now available around the world, but it is still important to mention that this is a very significant and important part in the sense that it is a rich source of nutrition and has been a part of our traditional medicinal system, particularly Ayurveda. So many medications are consumed with honey and has been an ancient part. It is as old as human civilization when humans were hunter-gatherers, even during from those days where they used to collect honey from the honeycombs to the time when modern humans realized and learned how to cultivate honey or how to establish apiculture over the years to this modern day has been a fascinating history of human kind in its own way, from the Romans to the Mayans, from the Indus Valley civilization to the Chinese civilization, from the ancient Egyptians to the Sumerians and Babylonians, Aztecs, or the Toltecs, or even the Incas. If you look into the history of every human ancient civilizations, you will get that there is an association with honey production or apiculture in some way or others. But honey is not just associated with honey production or apiculture, it is also important for our agriculture. Why? Because honeybees are responsible for the cross-pollination of about 85% of flowering plants, many of which are our traditional food and industrial crops, on which our modern industry and our food security is based. And extensive research around the world has shown that the presence of honeybees extensively held in the cross-pollination of the plants and increases the production per field, per acre, per hectare has always been associated. But it is still unfortunate that in many parts of the world, there are many communities, unfortunately, who continue to think bees as an insect pest, and sometimes they are killing them knowingly or unknowingly. This is unfortunate because bees actually help in this process of cross-pollination of the plants, and this is the only way out of the major ways of plant reproduction that helps in the evolution of plants, that has helped in the evolution of agriculture, and to this health has helped us in producing so many crops, flowers, fruit, varieties, and other crops that are associated with our life.
But why is it bees are important, and why we are so much? And also to remember that bees are also responsible for the cross pollination of the forest plants. These 20, 30 feet high structure plants could not have successfully reproduced without the help of bees. But it is also important to mention that bees are not the sole pollinators, although they are one of the most important, and I call them as primary pollinators of our ecosystem. But there are many other pollinators in the nature which are also useful for helping in the pollination of plants. And these, among them, we have bats, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं. They are very, very important in the what you call it, for the pollination, as well as various species of birds like hummingbirds, snails, slugs, beetles, wasps, ants, butterflies, and moths. All these species are responsible for pollination. Majority of these species are being impacted due to pollution and some other anthropogenic activities, but the worst hit are bees. Now, why we are so much worried about the bees is particularly the native bees. When we are talking about bees, we only consider ourselves to be habituated, and which is true, with the honeybees, which are only a handful of species. But outside honeybees, there are thousands of species of native bees which are restricted and located to various continents and the countries. So there are many species of bees in India which are found only in India or South Asia. Nowhere else they are found. There are many bee species in Canada which are only found in Canada and nowhere else in the world. So these endemic bees or wild bees or native bees, in addition to our honeybees, are responsible for the cross-pollination and maintenance of the homeodynamics of the ecosystem. They help in the process of agriculture, help in the process of establishing forests, as well as in the process of agriculture. And we know that traditionally agriculture is one of the most primary and important profession around the world. Even to this modern days, we estimate as 70% of India's total population is associated with the agriculture industry directly or indirectly. Think about the rest of the world. So this is one of the most ancient profession, and they have closely associated with human society and civilizations for a long time. Now, unfortunately, due to the extensive use of chemical fertilizers and pesticides, which includes insecticide, weedicides, herbicides, molluscicides, algicides, but particularly the pesticides which kill insects or the insecticides, these are toxic chemicals which kill bees in huge numbers. And farmers have a habit of excessive application of these chemicals on their field. And as a consequences, because we are applying more than what we need, out of the fear that we do not lose our crops to any other parameters in the nature, including pests or inclement weather, our farmers or farmers around the world are overusing this in their fields. As a consequence, we are losing them out in huge, massive number, which is detrimental for our ecosystem, which is detrimental for the dynamics of our ecosystem, and which is detrimental for the functionality of our ecosystem, because bees, through pollination, maintain the plants to regenerate. And because of the regeneration of the flowering plants around the world, which includes hundreds of thousands of species, our planet has come to this shape. And without the plants, there is very little hope for us to survive. So there has been an apocalyptic decrease in the number of insects around the world because of environmental pollution, the climate change, global warming, agriculture and industrial pollution, which has been significantly altered our environments, weather patterns, climatic regimes, and all these have direct impacts on the bees. Now, why are these bees being killed? Is because particularly in Western countries where are gigantic agricultural fields, pesticides are sprayed through aircrafts, and they come down in huge droplets on sunny days when the temperature is low and the wind speed is also limited, which is a very good day for spraying the plants, because then the droplets could come and collect on the leaf surfaces, and then through the stomata they will absorb, or through the plant pores they will absorb, get in the cell, and harmful insects which visit these plants while they consume will be killed because of these insects from this that has been absorbed by the plants. But unfortunately, these chemicals do not target only the unfriendly insects or the harmful insects or the pest insects. They also attack in huge number our beneficial insects like the bees, moth, butterflies, various species of beetles, wasps, and every other species which are responsible for the betterment of the environment. Because they are non-target specific, they are also killing our pollinators in huge number and bees in large, massive number.
One of the reason that our bees are dying in huge number is because many of these chemical droplets are landing on our bees, and because some of them are interacting with their nervous system, and particularly the neonicotinoid type of chemicals are impacting their navigation system or their GPS. As a consequences, many bees are not being able to return to their hive at the end of the day. Bees communicate with one another through complicated wiggle dance, and through which they communicate with the position of the earth, with the position of the sun, the direction of various forages or the plants or the flowers, and they communicate this information with other members of their hive, and they move back and forth in collecting nectaries and pollen grains for providing it to their hives, for generating their eggs, larvae, and colony, and for nursing their queen bees. But because they're unable to return to their hive, because these chemicals are interacting with their nervous system, many of them are dying in huge numbers. There is a disease that has been reported across North America, which is known as CCD, or colony collapse disorder, which in what results in this is a beekeeper gets up in the morning and he goes close to his beehives and he finds that all the bee boxes are there and millions of bees have died around and are lying dead in front of the boxes. This has been due to chemical contamination, also reduced immunity level among the bees, change of land use patterns, and various other factors which are impacting the ecosystem of the bees and are causing problems for them. As a consequences, as a consequence, it is what we are seeing is that there is a serious degradation and depreciation in the number of the bees. Even the ways the plants were harvested and collected is causing a huge damage to the bees. And contrary to our common belief that we have only seen bees which are making hives on the trees, on the branches, on the sides of the buildings, or in the bee boxes, there are hundreds and thousands of wild bees which do not make nest on the surface of the earth. They actually make deep holes and they will go inside. The queen bees will move inside, they will lay their eggs, and the bee colony is maintained under the soil. They do not produce commercial amount of honey, but nonetheless they are so many important for the cross pollination of the plants, particularly various native flowers and wildflowers, which are an important component of their ecosystem. Now, through irrigation water and rainwater, the residues of chemicals, either in the form of chemical fertilizers or residues of insecticide, pesticides, they are running down and percolating into the soil and reaching these bee colonies. And in most important, they are killing the queen bee. And once the queen bee is killed, the future of that particular colony collapses because the queen bee controls and regulates the entire colony. So this sad incident is causing the disruption and destruction of bee colonies around the world. Many native bees have been wiped out. In Canada, there are many species of bees which have been now estimated that has lost 97 to 99% of their population. They're hanging by the thread, and many of them are at the verge of extinction. Now, honeybees, which produce commercial honey, are usually cultivated commercially. So, which means that if a colony dies, a bee culturist or an apiculturist could go and buy new colonies, replace his old colonies, or create new colonies because they are commercially produced. But for the native bees, like the various species found in various different parts of the world where they are not commercially produced or bee colonies are not generated, it is entirely natural. The loss of the queen bee means the loss of the colony, and the loss of the colony has been threatening the extinction of those particular species of bees. This has gone rampant around the world and is causing significant degradation in the number of bee population, crashing of bee populations around the world. Now, this is very sad. This is very deeply associated with our the security of our agricultural system, our apicultural production system, as well as what the security and the longevity of our forests. Without the bees and the bats, the forest trees will never get pollinated, and many of the species will become extinct. One of the reasons that the bees are becoming endangered is because either a particular species bees are two types of herbivores. Like, for example, there are some bees which forage on a number of different species of plants.
they are at a better stage of surviving. But there are many species which has evolved over millions of years, where one particular species of bees is dependent on one particular species of plant for their supply of forage and nectar. And that plant is associated with that particular bee species, which for helping them in the process of cross-pollination. If either that particular bee species or if that particular species of plant become endangered or extinct, the bees or the plant dependent on in each other also crisscrosses and cancels one another, and they also become endangered or extinct. And many of these things are happening just within our time. On this auspicious World Bee Day, it is very important for us that we need the spread of education, awareness about bee conservation, and work towards in establishing safe bee sanctuaries around the world, whether the bees could thrive, they could populate and increase their numbers so that we can sustain our agricultural, forestry, and apiculture industries for the long time and help in the survival, or in other words, the long-term survival of the bee colonies or bee species around the world. And one of the foremost requirement for this is the reduction in the number of pesticides, insecticides being applied, and applied at a very high level, way beyond the need of the plants. Unless we restrict and contain the use of indiscriminate application of these chemical fertilizers and pesticides, insecticides way beyond their uses or way beyond their need, there is very little chance for the bee populations to thrive back. So it is very, very important for us and the farmer communities around the world to understand that we need to protect the bees for securing our future. When you are excess applying these chemicals way beyond your need, way beyond the threshold level, you're only adding toxicants to the environment to eliminate one very important natural friend of our ecosystem to be wiped out. And if they wipe out today, our human society will also get wiped out down the line, because without all bees, plants won't survive, and without plants this planet cannot continue to thrive and survive down the long run. Our population has been increasing, our forests have been decreasing, our ecosystem destabilization is at a crossroad at this point of time. So hence, conservation of bees should be a priority for every country that has an environment to protect them, whether you are a developing, underdeveloped island nation or a small or a big nation. Everyone has agriculture, everyone has forest, and everyone has to maintain the sanctity of their ecosystem. So bee conservation is very, very important. We need to repopulate these areas with bee species. We need to work together hand in hand in learning about the life cycle of various new bee species and make it a national priority or even an international priority in exchanging information, knowledge, and technology with one another in helping and working towards bee conservation. Conserving bees is conserving the long-term future of our human society and human civilization. So long live the World Bee Day. I request everyone to join with me to take a pledge that we need to work together on a common platform for the protection and conservation of the bees for sustaining our future in the long run. Thank you, Dr. Sharma. Thank you once again so much for giving me this opportunity to make this appeal on the auspicious World Bee Day. Thank you very much, and we'll continue with you in your journey with the AYUSH platform in the coming days. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. You are excellent as always, dear. God Thank bless you. you and all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you very much. मैं आदरणीय पारुल मैडम से, क्योंकि पारुल जी आदरणीय पारुल जी जुड़े हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे मैडम? नमस्कार सर जी, जैसे भैया ने बताया वैसा इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और बी जो है वो अगर नहीं है तो हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस क्या, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बी जो है वो आज हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी बन गई है। और सिर्फ जो हमारा पोल्यूशन है उसकी वजह से नहीं, लेकिन ऐसा रिसर्च भी आया है कि हमारे जो व्हीकल्स बड़े हुए हैं, तो व्हीकल ट्रैफिक जो है हमारा, उसकी वजह से भी बीज जो है वो ग्रस्त हो रही है। हमने बी उछेर केंद्र जो है, मधुमक्खी उछेर केंद्र शुरू किए हैं, लेकिन अगर आपके पास ढंग के पुष्प नहीं है तो ये उछेर केंद्र जो है वो क्या कर पाएंगे। और दूसरी एक बात, आयुर्वेद के अंदर जो है वो हर किस्म का
शहद जो है वो मिलता था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रक्त प्रदर के अंदर हनी का यूज करना है तो जपा कुसुम का जो अगर हनी है तो उससे मुझे रिजल्ट जल्दी मिलेगा। स्किन का प्रॉब्लम है तो जो हमारा कटु निम्ब है उसका जो हनी आएगा उससे हमें रिजल्ट मिलेगा। इस तरह का जो बाइफरकेशन था वो अगर हम पुनः शुरू करें, भैया ने बोला उस तरह अगर हर कोई प्लेज ले तो हम जो है इतना ये यकीन दिला सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को कि हम न सिर्फ क्वीन बी लेकिन हर प्रकार की जो बीज है उनको भी हम सुरक्षित रख सकेंगे और उनसे जो हमें उत्पाद मिलने हैं सिर्फ शहद नहीं है, शहद के अलावा भी काफी सारे उत्पाद हमको हनी से हनी बी से मिलते हैं। हनी बी भी है, वास्प भी है, काफी सारे हैं जिनके शहद कलेक्ट करने का एक उनका माध्यम बनता है और उनकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनीस अरे मिलते हैं। तो व्हाट इज अ बी इज अ विंग्ड इंसेक्ट closely related to wasp and ant, known for its role in pollination. तो आज जो वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं उसमें भी शायद इनकी ड्विंडलिंग जो संख्या है वो एक कारण हो सकती है। सो बेस्ट नोन बी स्पीसीज जो है वो वेस्टर्न हनी बी, इट प्रोड्यूसेस हनी। और बी जो है मोनोफाइलेटिक लीनिएज जो उनका होता है सुपर फैमिली में एपोइडेरा, वो करेंटली कंसिडर्ड क्लेडे एंथ्रोफिला। तो उसके अंदर वो उस फैमिली के अंदर वो बी आती है। उनकी 5 आंखें होती हैं जिसमें 2 कंपाउंड आईज है और 3 स्मॉल आईज है। सिंपल आईज जो है उनके टॉप ऑफ द हेड है, हेड के आगे के पार्ट में है इस तरह। और हनी बीज कम्युनिकेट थ्रू डांसिंग, जैसे भैया बता रहे थे वैगल डांस बोलते हैं उसको, और उसकी वजह से दूसरी बीज जो है वो भी उसको अनुसरण करेगी। हमारे कोलेवड़ा के अंदर बहुत बड़े छत्ते लगते थे तो शुरुआत में हमने मान लिया कि हनी कॉम्ब है, लेकिन फिर पता चला वास्प कॉम्ब है। तो उसके अंदर से हमने शहद निकाला तो हनी अपने जो हनी बी का होता है वैसा ही वो था और बहुत बड़े छत्ते थे। तो उनकी वजह ये थी कि आसपास के जो खेत थे वहां से वे सब कलेक्ट करके लाते थे और फिर तो हमारा खुद का बॉटेनिकल गार्डन बन गया। तो वहीं से वो अपना जो है वो पोलन भी एकत्रित करते थे और उनका जो चाहिए नेक्टर, वो नेक्टर भी उनको मिल जाता था। उसकी वजह से छत्ते जो है वो बहुत बड़े, यानी एक व्यक्ति खड़ी रहे इतने बड़े 5 फीट 6 फीट के छत्ते बनते थे हमारे वहां पे। तो ये अब तो नहीं बन रहे। फिर ओनली द फीमेल बी स्टिंग्स, मेल जो है ड्रोन्स दे डोंट हैव स्टिंगर्स। तो वो मधुमक्खी का काटना उसका भी जो है वो मेडिसिनल वैल्यू आयुर्वेद ने बताई है। तो बीज हैव पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल, 170 रिसेप्टर्स उनके पास है और 50 टाइम्स ज्यादा डॉग्स की उनकी जो स्मेल ग्रहण करने की क्षमता है वो है। और इसी वजह से वो पेट्रोल और ये सब जो नुकसानकारक चीजें हैं उनको वे तुरंत सूंघ के दूर चले जाते हैं। तो ये जो है हमको जितने पेड़ बढ़ेंगे, जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हम ज्यादा लगाएंगे तो उसकी वजह से इनकी संख्या हम पुनः बढ़ा पाएंगे, होपफुली गॉड परमिटेड। बीज कैन सी अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये उनका उपयोग हम कर सकते हैं। दे कैन नॉट सी रेड, रेड कलर नहीं देख सकते, लेकिन जो फ्लावर जो है उनको पहचानने के लिए और नेविगेशन के लिए उनकी ये जो सेंस है अल्ट्रावायलेट लाइट पहचानने की, उसका उपयोग वे करते हैं। यहाँ पे आप देखिए बी जैसे ही दिखने वाले जो है वे नॉन बी है। तो उनका साइंटिफिक नेम में तो नहीं जाएंगे। तो उनका जो है हेड, थोरैक्स और ये टेल, यहाँ पे जो है आई उनकी कंपाउंड है, ये उनके एंटेने हैं, ये उनके लेग्स है। लेग्स देखो पीछे वाले जो है वो बड़े लंबे हैं। तो ड्रोन क्वीन, क्वीन का फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें से वर्कर भी बनेंगे और ड्रोन भी बनेंगे। तो क्वीन जो है वो जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने जो मेल पार्टनर है
उसका वो कवलन कर जाती है, तो फिर जो है वो आगे बढ़ाने में उसको दिक्कत होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको जितने चाहिए उतने संख्या में वो अपने आप को एकोमोडेट कर सके। तो आयुर्वेद के अंदर जो उसका प्रोडक्ट है हनी और बी वैक्स, उसके अलावा वो हम पंचामृत में यूज करते हैं, हम कफ न के रूप में उसका यूज करते हैं। एक्चुअली वो त्रिदोष पे काम करता है, लेकिन विशेष करके कफक न है, वो डाइजेस्टिव है, खास करके लीवर टॉनिक है, रिजुविनेटिंग है। और आंख के रोगों के अंदर अगर शुद्ध हनी हमें मिल जाए और आंख में डाल दे तो काफी सारी दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल, अब तो ट्रैकोमा जो है उससे हम मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आंख के अंदर दूसरे भी प्रकार के अल्सर्स होते हैं, दूसरे भी प्रकार के ग्रोथ होते हैं, उसके ऊपर इसको लगाने से तुरंत ही हमें रिजल्ट मिल जाता है। वो स्मोकर्स कफ जो होता है उसके अंदर हनी जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। थ्रोट किसी भी इंफेक्शन के अंदर वो काम करता है। रेस्पिरेटरी इश्यूज के अंदर जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीतोपलादी, तालिसादी, तो उसको शहद के साथ मिक्स करके ही हम देते हैं। बर्न्स के ऊपर जैसे ही जलन हुई, शहद लिया, लगा दिया, फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें तो कोई वांधा नहीं, लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट में शहद जो है वो काम करता है। स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर, खास करके अल्सरेटिव प्रकार के जो डिसऑर्डर्स है, उसमें हमें रिजल्ट मिलता है। कॉस्मेटिक यूजेस जो है उसमें फेशियल वॉशेस, स्किन मॉइस्चराइजर्स और हेयर कंडीशनर्स में इसका उपयोग आज भी होता है। उस वक्त महिलाएं नहीं, पुरुष भी जो है कॉस्मेटिक यूजेस करते थे। तो अब बीच में ऐसा दौर आ गया कि पुरुषों ने सब छोड़ दिया, लेकिन अब फिर से दौर आया है। लेकिन जिस तरह का उस टाइम में था कि पुरुष जो है अपने पुरुषत्व का रक्षण करने के लिए कॉस्मेटिक का यूज करते थे, आज जो है वो अच्छे दिखने के लिए, जो बोलते हैं ना चिकना दिखने के लिए, हीरो दी जैसा दिखने के लिए, वो सही नहीं है। पुरुष को पुरुष जैसा ही दिखना चाहिए, स्त्री को स्त्री जैसा ही दिखना चाहिए। अपीयरेंस के मुताबिक ही सोच आएगी, उसके मुताबिक ही हमें चीजें पसंद आएगी। फिर टाइप्स ऑफ हनी के अंदर है माक्षिका, वो डार्क रेड कलर का होता है। ब्राह्मर व्हाइट होता है। पित्तक, वो घी जैसा दिखता है। क्षुद्र, दैट इज ब्राउन। हमारे यहाँ पे अशोक भाई तलाविया थे, उन्होंने ये ब्राह्मर और पित्तक प्रकार के शहद जो है वो बताए थे, और ऐसे मिलते हैं। ही वॉज स्टेइंग एट अमरेली, पूरी जिंदगी वहीं रहे, घूमते रहे, लेकिन उनका हेडक्वार्टर जो था वो अमरेली था। तो बीइंग ए सेमी अर्बन एरिया, उनको जो है ये सब आराम से मिल जाता था। अब तो नहीं रहे, तो उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हनी इज यूज्ड एट ए कैटलिस्ट, एडजुवेंट, कोल्ड ड्रिंक इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। तो हम उसको व्हीकल के रूप में भी उसका यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स efficiency and palatability. That is possible only if there are enough quantities of bees available and they are able to produce enough honey. सिर्फ हमारे देश की बात करें तो 140 करोड़ है। उन सभी को शहद पहुंचाने के लिए हमारे पास उतने फूल वाले वृक्ष चाहिए, उतने पेड़ पौधे चाहिए, और उतनी बीज जो है वो भी होनी चाहिए, तब जाके हमें उतना हनी मिल पाएगा। तो आजकल जो है वो सेकेरिन वाला बनाते हैं, या फिर जो है ये जो हम उछेर करते हैं उसके अंदर वे लोग पहले से ही चाशनी डाल देते हैं, तो बी जो है वो वहां पे चाशनी को खा के वहीं पे अपनी सलाइवा डाल के उसमें हनी जैसा रूप दे देती है। तो ये भी एक ठीक चीज नहीं है, क्योंकि कफक न होने के बजाय वो कफकर बन जाएगा। फिर बी वैक्स जो है उसको मधुचिष्ट बोलते हैं। इट्स एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, बोथ इन सिंगल ड्रग एंड कंपाउंड फॉर्मुलेशन। खास करके एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है स्किन प्रोटेक्शन के लिए, स्किन हीलिंग के लिए, ऑइंटमेंट या क्रीम के रूप में। और जो है वो दूसरे जो वैक्स है, जिसको मोमबत्ती का वैक्स हम बोलते हैं, उसके सामने हमारा जो बी वैक्स है वो स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा निकला है। तो फिर बी पोलन जो है, बी सिक्रीशंस है, वो भी उसका उपयोग भी होता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है,
इम्यूनो बूस्टर है, लेकिन आजकल जो है उनकी भी एलर्जी उत्पन्न होने लगी है। फिर आता है रॉयल जेली, इट हैज पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, और बी और उसके प्रोडक्ट्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयुर्वेद है। बिना बी के आयुर्वेद का होना नामुमकिन है। इसीलिए बीज जो है वो हमारा खुद का प्राण है, उनको बचाना हर आयुर्वेद वालों की एक धार्मिक फर्ज है। ऐसा मैं कहूंगी तो हाइपर बोले नहीं होगा, क्योंकि नॉट ओनली एज अ मेडिसिन, एज ए कॉस्मेटिक ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशनल बेनिफिट बहुत बढ़िया है। खास करके बच्चों के अंदर, प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर उसका जो है वो बहुत अहमियत रहता है। तो बी एंड डी वैक्स जो है, दोनों को अगर हमें चाहिए तो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। सो अ हैप्पी bee day to all the bees in the universe. Thank you very much, sir, for giving me a chance to speak on your prestigious platform. And a good जय night, हो, sir. जय हो, जय हो, आपकी जय हो। आप हर पहलू को बड़ा शानदार रंग देती है मैडम। सैल्यूट, सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू यू। ग्रेट। आदरणीय सीपी शर्मा सर, पहले सकत कुमार बसु जी से एक बार ओपिनियन ले लें। सकत जी, आर यू कंफर्टेबल? डॉक्टर सकत बसु। मैं डॉक्टर सीपी शर्मा सर से कंक्लूडिंग रिमार्क्स की प्रार्थना करता हूं, इफ ही इज कंफर्टेबल। थैंक यू सर। चलिए, कोई बात नहीं, सभी विचारों के आराम में मैं खलल डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैडम। शानदार रहा, बहुत शानदार रहा। सकत जी, आप दोनों ने बहुत अच्छा दिन सेलिब्रेट कर दिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट।